इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा और 11 जिले जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन में हैं। गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, और खेत से 15,000 रुपया कुंटल चावल में बिक गया है देखते देखते। महोदय, जब ये चावल का एक्सपोर्ट नॉन बासमती राइस के नाम पर रुकता है तो ये किसान जो स्पेशलिटी राइस पैदा करते हैं वो सफ़र करते हैं। काला नमक राइस बुद्ध काल का है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55, जिसको हम कहते हैं शुगर फ्री, 49 है। उसमें जिंक 4 टाइम, आयरन 3 टाइम, और वही एक राइस है दुनिया में जिसमें विटामिन ए है, उसमें प्रोटीन डबल है। तो महोदय, मेरा ये कहना है कि ये ऐसे राइस हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए, क्लासिफिकेशन हो, और इन जो स्पेशलिटी राइस है उनको डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाए। जैसे बासमती के लिए है, बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन मेरठ में है, उसी तरह से इन स्पेशलिटी राइस का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। सभापति महोदय, श्रीमान कोला बाबूराव गारू। Sir, thank you, sir. I want to bring to Honorable Chairman, sir, and to the Augusta House, very sorrowful issue, what is going on in India. Appeal to increase the pension under National Social Assistance Program to elderly BPL people. Sir, social care is the crucial part of any government to provide much needed support to old people who need assistance for their survival and daily needs. The old age pension scheme is a significant step towards the fulfillment of the directive principles of the state policy, which mandates upon the government to undertake welfare measures. No doubt, the Government of India is implementing Government of India scheme. It is one of the 5 sub-schemes of the NSAP under National Social Assistance Program that provide monthly pension to BPL senior citizens. But sir, the most unfortunate part is that Government of India is providing only just 200 per month per pension to BPL senior citizens of the country. The second painful fact is that the current system of the determining the benefits is relies on antiquated methodology that fails to reflect the present day socio-economic realities, thereby excluding substantial number of genuinely eligible individuals. The third painful fact is that Union government has capped the number of the beneficiaries from all states at 3 crores when country has only 15 crore population. The fourth painful fact is that budget for this has been stagnant since 2015-16. I am not saying that all 15 crores are eligible, but sir, as per estimates, around 5.1 crore elderly people are under BPL category. So all these who are eligible should be provided financial assistance under the Government of India schemes. The Government of India giving it to only 3 crore people, thereby depriving more than 2 crore people for financial assistance. The point is 200 given by Government of India is too low. It was last enhanced more than 1 decade ago. So there is an urgent need to increase the amount from 200 to at least 1,000 per month. Thank you. Yes, Selva Ganapati ji. Chairman sir, I rise today to draw the urgent attention of this August House to a matter of deep concern affecting our senior citizens. The central government health scheme has implemented for pensioners in the Union Territory of Puducherry. The issue is that the CGHS was envisioned as a lifeline for retired government servants, ensuring that their medical needs are met with dignity and efficiency. However, in Puducherry, the scheme currently covers only 2 empaneled hospitals, though there are 6 medical colleges with hospitals. Even Jipman Hospital, which is a central government institution, is not in the list. This severely restricts access for pensioners. Many of them are aged and frail. The present system requires pensioners to first obtain approval from the CGHS center
and then seek treatment only in the approved list of hospitals. This bureaucratic process causes delay in medical care, which is particularly burdensome for elderly patients. The serious human impact is that imagine an aged pensioner in large cities like Chennai suffering from a sudden cardiac problem or recurring dialysis. Instead of going to the nearest hospital, they are forced to search for CGHS center and navigate administrative hurdles. This is not just inconvenient, it is the matter of life and death. The very purpose of CGHS is defeated if access to timely treatment is compromised. Pensioners who have dedicated their lives in service to the nation should deserve seamless health care without procedural delay. The hospitals are not interested since the rates in their opinion are not remunerative. Further, the rates are not revised annually commensurate with the rise in cost of the maintenance. Another important reason is that the payments from the CGS are delayed due to procedural and administrative problems. This broader vision is that the health care is not a privilege, but it is a fundamental right. By strengthening CGHS in Puducherry, we set a precedent for other regions where similar gaps exist. I strongly urge the central government to expand the ambit of CGHS in Puducherry by bringing all hospitals in the Union Territory under the empaneled list. This would ensure that the pensioner can avail treatment at the nearest hospital. Thank you, Chairman, sir. I want to address a digital frontier that is full of promise as it is of peril. I'm talking about the world of electronic gaming. As we march towards the vision of a Viksit Bharat in 2047, we must recognize the orange economy. Our creative and digital sector is no longer a peripheral industry. It is a vital pillar of our 1 trillion digital economy goal. Currently, India's creative economy is valued at approximately $30 billion, contributing to nearly 8% of our working population. However, sir, we must distinguish between two very different realities within the sector. Sir, on one hand, we are witnessing the crisis of unregulated amateur gaming and its impact. The sprawling nature of unregulated amateur online gaming has led to grave repercussions. We all have heard the heart-wrenching stories of young children driven by gaming addiction, descending into spirals of self-harm, as we saw in incidents that happened recently, the unfortunate incident where 3 young kids lost their lives. Clinical studies now show a direct link between excessive unregulated gaming and the rise of ADHD, acute anxiety and depression amongst our children and youth. Sir, as a parent, not merely as a member of parliament, I request the government to regulate the entire ecosystem from game development to streaming and mandate game audits to ensure these digital spaces are safe for our children. So, while we create a safe and a conducive ecosystem, on the other hand, there is a potential of professional esports largely which remains untapped. So, we have millions of serious, highly skilled electronic gamers who are passionate about this craft. India now boasts of 500 million amateur gamers, the largest gaming audience in the world, and lakhs of professional gamers. Our gaming market is valued at about $3.7 billion right now, is projected to soar to $10 billion by 2030. Recently, the AVGC sector alone, which will require roughly about 2 million skilled professionals by 2030, is a great opportunity for our youth, for employment particularly. To unlock the full value of gaming, design, development, professional leagues, I urge the government to grant official sports status to esports, as they are also being accepted by international competitions, Olympics, and other bodies. This will provide our youth with a structured, legitimate career path while positioning Bharat as a global leader in the digital economy. The budget's proposal to set up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools is the right start for our youth, Yuva Shakti, in the right direction. Sir, it's a very important area. Thank you very much. श्रीमान सतनाम सिंह सांधू जी। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की एक कॉमन डिमांड सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, वो डिमांड है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से
लंदन, सिंगापुर और वैनकूवर के लिए कुछ नई फ्लाइट शुरू करने के लिए। चेयरमैन साहब, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने के एविएशन सेक्टर ने बीते एक दशक में बेमिसाल एक्सपेंशन देखा है। साल 2014 में जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, वहीं आज ये संख्या 163 को पार कर गई है। आज पंजाब के पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, चंडीगढ़ और अमृतसर, और 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। और सर, हम आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुरु रविदास जी की जयंती पे पंजाब आए 1 फ़रवरी को, और उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत श्री गुरु रविदास जी के नाम पे रखने का बहुत बड़ा ऐलान किया और समूह पंजाबियों की भावनाओं को सम्मान किया। और दूसरा गिफ्ट सर दिया प्रधानमंत्री जी ने हमें, हलवारा एयरपोर्ट लोकार्पण किया गया। पंजाब को बहुत मिला इस ग्रोथ में, लेकिन पंजाबियों का दिल जैसे कि दिल मांगे मोर, हम चाहते कि हमें और मिले। और मेरा निवेदन है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से दुबई और आबू धाबी के लिए 2 इंटरनेशनल फ़्लाइट चलती हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी 60 लाख पैसेंजर को हैंडल करने की है। अभी 35-40 लाख की कैपेसिटी पे वो एयरपोर्ट काम कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ये एयरपोर्ट अंडर यूटिलाइज है। अगर यहाँ से सिंगापुर, लंदन और वैनकूवर के लिए फ़्लाइट शुरू होंगी तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। और इसके लिए मेरा निवेदन है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉल की सूची में इस एयरपोर्ट को शामिल किया जाए, ताकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कैरियर हैं, जो फॉरेन एयरलाइंस है, वो भी लैंड कर पाएँ और हमारी अपनी एयरलाइंस भी यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हमें दें। और इसके साथ सर मेरा निवेदन ये भी है कि यहाँ से कार्गो की फ़्लाइट्स भी बढ़ाई जाएँ, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है पंजाब का, खास करके एग्री एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ावा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान मोहम्मद नदमुल हक जी। Thank you, sir. Sir, the Farakka barrage is a union project. It is controlled and operated by the union government. And yet, when West Bengal bears the devastating consequences of land erosion and siltation, the union suddenly claims it has no responsibility. That is why the Farakka barrage projects authorities full 120 kilometers jurisdiction must be restored immediately. In 2005, the union government accepted a basic scientific reality that a river functions as a single system. Acting on this is extended the Farakka jurisdiction to 40 kilometers upstream and 80 kilometers downstream. The decision was not political but hydrological. So what changed in 2017 was the union government's willingness to bear responsibility when Farakka's jurisdiction was cut down to 19.4 kilometers. Sir, erosion and siltation does not stop at notification boundaries. The union made this position explicit in its letter dated 28 July 2022 that the barrage's project authorities is responsible only for the safety of the barrage. Erosion beyond 19.4 kilometers is the state's responsibility. At the same time, the union retains complete control over barrage gates and silt regime. This is not federalism. This is the union government keeping power while exporting damage. Even the joint technical committees appointed have identified erosion-prone stretches across Malda and Mushidabad, describing river behavior as continuous and system-wide. They call for integrated planning. The union's response was not coordination, it was withdrawal. No alternative authority was created, no compensation was offered. Sir, the costs are staggering. Since 2017, West Bengal has spent 168.47 crores on 31 vulnerable stretches and another 80.14 crores in a single year on just 14 kilometers. Sir, nearly 2,800 hectares of fertile land have been lost and properties worth 1,000 crores have been destroyed by the effects of a centrally controlled barrage. Sir, you cannot call the Ganga a national river and walk away when it flows in Bengal. Sir, you cannot call Ganga a national river and walk away when it flows through Bengal. Restore the full 120-kilometer jurisdiction of the Farakka Barrage Project Authority. Responsibility cannot be sliced away
while control remains. The Dr. people of Bengal will not bear कविता this cost. पाटीदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की। महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश की गौरवशाली विरासत और हमारी नारी शक्ति की शिल्प कला, चंदेरी और महेश्वरी बुनकरों की आवाज़ बुलंद करना चाहती हूँ। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने हमारे पारंपरिक उद्योगों में नई चेतना फूंकी है। चंदेरी की परभासी कोमलता और माहेश्वरी साड़ियों के स्थापत्य डिज़ाइन केवल वस्त्र नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश की आत्मा है। लेकिन बदलते वैश्विक बाजार में हमारे इन बुनकरों, जिनमें 70% से अधिक मेरी बहनें हैं, को सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ई कॉमर्स एकीकरण, आज का युग डिजिटल है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि चंदेरी और महेश्वरी बुनकरों को सीधा indiahandmade.com और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर जीरो कमीशन मॉडल के जरिए लाभ सीधा बुनकर के खाते में पहुंचना चाहिए। माननीय महोदय, हमारे पास जीआई टैग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मार्केटिंग अभी भी कम है। हमें ब्रांड मध्य प्रदेश भारत के तहत एक आक्रामक मार्केटिंग अभियान की आवश्यकता है, ताकि चंदेरी और महेश्वरी का नाम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सके। आज की मांग है कि हम बुनकरों को आधुनिक रुझानों से जोड़ें। हर प्रमुख बुनकर क्लस्टर में डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएं, जहां निफ्ट के विशेषज्ञ हमारे बुनकरों को आधुनिक रंगों और वैश्विक डिज़ाइनों का प्रशिक्षण दें। महोदय, आधुनिकता से जुड़कर जब हमारे बुनकर और समृद्ध होंगे, तो देश की सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूती में और ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। हमारी संस्कृति और पारंपरिक उद्योगों को आगे बढ़ाने की दिशा से मैं सरकार से सहायक कार्रवाई की आग्रह करती हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोक हितम मम करणीयम के भाव से जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग की चिंता की है, इस और भी उनके सराहनीय कदम होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सगानी जी। Honorable Chairman, sir, rivers are not merely channels of water, they are lifelines of our civilization and the foundation of agriculture, ecology, and livelihoods, and a shared natural resource that must be governed by fairness, law, and mutual respect among states. इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान दिलवाता हूं कि स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ बीकानेर में 1927 में सतलुज वाटर जो संबंध हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ऑन पे राजस्थान को अधिकार दिया गया पानी यूज़ करने का ऑन पेमेंट ऑफ सीनोरेज. It was a contractual obligation for sharing of inter-territorial water. Then Rajasthan became the successor state of Bikaner and payment was coming. But after the reorganization in 1956 of the states, these payments were unilaterally discontinued to Punjab. Over 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा overdues इसके हो गए हैं. Interstate waters fall within domain of union and succession to the pre-constitution agreements, as well as consequences of state reorganization as responsibility of Government of India is paramount. Sir, basic international principle है कि river water जो है वो riparian law of water rights के अंतर्गत आता है. Riparian states of रावी, ब्यास और सतलुज पंजाब और हिमाचल ही हैं, और any non-riparian state can be given water only for consideration of revenue to the riparian state. उसके बाद 31 दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को एलोकेशन कर दी गई यूनिलेटरली. पंजाब ने कभी भी ये एग्रीमेंट पंजाब असेंबली में रेटिफाई नहीं हुआ. इट वाज इम्पोज्ड ऑन पंजाब. इट शुड बी रिव्यूड दैट बिकॉज अभी पंजाब की ग्राउंड वाटर जो सिचुएशन है और जो वाटर डेप्लेशन है और जो पंजाब में वाटर कंटेमिनेशन है, 70% ऑफ दी पंजाब के रिवर का 70% पानी बाहर की स्टेट्स को जा रहा है. 19 MAF वाटर, टोटल 25 MAF है. लेकिन जब पंजाब
में फार्मर एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वाटर की, 14 लाख ट्यूबवेल। उस दिन ही मंत्री जी ने कहा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन है, और जो है भी वो भी आर्सेनिक और कंटेमिनेटेड है। तो मैनी ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन रेड जोन and water having all the impurities। तो 11.25 MAF पानी राजस्थान को जाता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसका मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि नो पेमेंट इज़ रिसीव्ड आफ्टर दी जो 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका रिव्यू होना चाहिए। और 1981 की जो एलोकेशन है। डॉक्टर एम तंबीदुरई जी। Sir, I want to raise, with your permission, regarding the problems of the Valmiki community in Tamil Nadu, sir. In Karnataka, the Valmiki community is treated as a tribal category. In Tamil Nadu, they are backward class. I am requesting the central government to take necessary action, because our honorable former Chief Minister of Tamil Nadu, Amma Jayalalitha ji, passed a resolution in the Assembly to include this Valmiki community as a tribal category. Because in Tamil Nadu, tribal community is very less. And also, this Valmiki community deserves that kind of category. For example, my driver, he belongs to Valmiki community. He married in Bangalore. His wife is tribal community, but my driver is a OBC category. Why this kind of discrimination? Therefore, because when the reorganization of Madras province reorganization came place, at that time, because there is a lot of demand, this Valmiki community people to include as a tribal in also Tamil Nadu government recently, after Madam's passed resolution, now recommended to central government to include the Valmiki community in the tribal category. I am insisting the central government, this is a very, very important issue, because those people are hunters. They are living in most of the forest. That community must be included and give the benefits to the Valmiki community people, especially in Tamil Nadu, as Karnataka. That has to be included as a Valmiki tribal category. Sir. That is my demand. Dr. Sarfaz Ahmad ji. महोदय, झारखंड में एकमात्र एम्स देवघर में है जिसमें विधिवत रूप से 2019 से ये स्टार्ट हुआ है, और जिसका उद्घाटन 12 जून 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज ये हालत है, बहुत उम्मीद थी लोगों को कि इससे झारखंड वासियों को, उसके आसपास के जगहों को, इलाकों को लाभ होगा, लेकिन मात्र केवल ओपीडी वहाँ पे चल रहा है। ओपीडी के अलावा कुछ नहीं है, ना अच्छे डॉक्टर हैं और ना दवाइयों की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं यहाँ पर, उसको विधिवत रूप से भारत के अन्य देशों में जिस तरह से एम्स की व्यवस्थियाँ चल रही हैं, उसी स्टैंडर्ड का झारखंड में भी इस देवघर को अपडेट किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान एडी सिंह जी। Thank you, Chairman, sir. I wish to raise my request to raise the following matter of urgent public importance: need for examination reforms in view of rampant irregularities and paper leak. In recent years, the credibility of India's examination system has been severely undermined by repeated instances of irregularities and paper leaks in both centrally and state-conducted recruitment and entrance examinations. These incidents do not only disrupt the lives of lakhs of aspirants, but also erode public trust in institutions meant to ensure fair and transparent selection process. Several high-profile cases have come to light. The NEET UG 2024 paper leak caused widespread protests across the country, raising serious questions about the security of question
papers and the role of examination authorities. Similarly, in Bihar, the BPSC, Bihar Public Service Commission, and teacher recruitment exam have witnessed repeated paper leaks, leading to cancellation and arrest. And in Rajasthan, the REET, Rajasthan Eligibility Examination for Teachers, has faced major controversies in multiple editions with evidence of organized cheating racket involving officials and coaching centers. States like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Haryana have also faced similar problems in police, teachers and clerk level recruitment exam. The core reason behind such failure include lack of strong cyber security protocols, corruption within the examination and printing agency outsourcing without proper checks and political interferences. The absence of a uniform standard for examination, governance and inadequate use of technology further weakens the process. The government has initiated some steps. The Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024, which criminalizes organized cheating and recommends penalties, but only in central sphere. However, more robust measures are needed, which should also serve as model to states. These include use of end-to-end encrypted digital question paper delivery, deployment of AI-based surveillance in exam centers, centralized regulations of private printing and logistic agencies, establishment of a National Examination Security Authority holding top officials accountable for administrative lapses. Additionally, there is an urgent need for speedy trial of offenders, blacklisting of corrupt service providers, and transparent grievances redressal system for affected candidates. In conclusion, the examination reforms are critical not only for restoring students' confidence, but also for safeguarding the merit-based recruitment foundation of India's governance and education system. Thank you, sir. श्रीमान रवंगवारा नरसारी जी. सर, my time remains only 1 minute, sir. So कल के लिए मौका देगा तुम्हें. Now question number 106. Question hour, श्रीमान. Question number 106, श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी. On what road?